अस्सलाम वालेकुम। तो आज हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। घर में बैंगन पड़े हुए थे तो मैंने कहा आ जाओ इसको एक नए तरीके से आज बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बैंगन ले लिए, का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसके लिए पहले से इसको मैंने छिलका उतार दी। छिलका भी आप देख लें, नज़र आ रहा है ना किस तरह मैंने उतारा है। एक जगह पे छोड़ के दूसरी जगह से उतारा है, इसी तरह गोल गोल करके। और फिर बीच में आप देख रहे होंगे मैं छुरी से कट भी लगा रहा हूँ। तो कट भी इतना लगाना है ना कि पूरा आर पार नहीं जाना, ऊपर से हल्का कट लगाना है। और बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो आधे से ज़्यादा कट नहीं लगाना, और इस तरह लंबा कट लगाना है। फिर आगे आपको तो पता लग जाएगा कि लंबा कट हम क्यों लगा रहे हैं। तो एक एक करके मैं सब में कट लगाए जा रहा हूँ। अच्छा, आप ये जो है ना इस वाले बैंगनों से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, और जो दूसरे लंबे होते हैं उससे भी ये बन सकती है। पर ये जो गोल वाले हैं ना, इससे थोड़ी सी आराम से रेसिपी बन जाएगी, लुक भी इसका अच्छा आएगा और इसको हैंडल करने में भी आसानी होती है। वो जो लंबा होता है ना, वो एक तो आपको पता है उसकी इतनी डाया होती नहीं है ना, वो हैंडल नहीं हो पाता। उसको कट करोगे बाद में पूरा खुल जाता है तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। ये थोड़ी सी हाथ को लग भी गई, पर चलो खैर है। अब ये आपने इसी तरह एक एक करके काटने। अच्छा, जिस डिश में आपने सर्व करने या जो बर्तन आपने लेना है बाद में, ये जो प्रोसेस में हमने इसको थोड़ा स्टीम भी करना होगा, तो उसी हिसाब से अपने बैंगन लेने। तेल फ्राई पैन में डाल दिए। अब तेल कितना लेने, कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं अपने हिसाब से तेल लेते हैं, तो वही आपने भी देखना है कि कितने बैंगन लेने, उस हिसाब से तेल ले लें। फ्राई पैन को हल्की आंच पे मैंने गर्म कर लिया है। तो अब बैंगन हम डाले जा रहे हैं, एक एक करके बैंगन आप डाल लें और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको फ्राई करवाना है। साथ ही साथ इसकी जो है ना साइड आप बदलते जाएं कि बहुत ज़्यादा ये फ्राई भी ना हो जाए, क्योंकि उस तरह फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा हमसे। तो ये अब फ्राई हो रहे हैं। और हाँ, रखते हुए भी ये भी ध्यान रखना है ना कि ऑयल से हाथ ना जले, आराम आराम से रखना है। पलटाने के लिए अगर कोई इस तरह की चीज़ हो, चिमटा शिमटा हो, वो भी इस्तेमाल कर ले। घर में नहीं पड़ा था हमारे पास तो हाथ से ही रखे हुए हैं और हाथ से ही इसको कोशिश करते हैं पलटाने की। तो आप भी देख ले, अगर चिमटे से हो तो एहतियात के साथ कर ले, बेहतरी होगी। हम महदूद वसाइल में ये वीडियो तैयार करते हैं, इसलिए जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं है वो आस्ता आस्ता ला रहे हैं। जैसे जैसे मेरे बेटे को पे मिलती है वैसे वैसे हम चीज़ें पूरी करते हैं। तो आप भी ये ना सोचें कि ये चीज़ है नहीं। ये देखें, बैंगनों को पलटा है, ये एक तरफ से ब्राउन हो गए, अब दूसरी तरफ से हमने रखे। ठीक हो गया, तो ये ब्राउन हो गए हैं ना। अब आगे जाते हैं अगले प्रोसेस पे। अब एक दूसरी कढ़ाई ले ली, वो प्रोसेस में गैस पे करवा रहा था, सिलेंडर पे। अब ये वाला जो है ना हम चूल्हे पे दूसरी लकड़ियों पे करवाने जा रहे हैं। गोश्त मैंने ले लिया। अच्छा, ये भी है कि अगर घर में गोश्त ना हो ना, तो ये कोई लाजमी नहीं कि आपने इसमें गोश्त फिलअप करवाना है। खाली जो है ना प्याज और कोई भी मसाला हो, जिस तरह प्याज टमाटर का मसाला बना लो, वो भी आप उसमें से बाद में डाल लोगे। आगे वीडियो में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो महंगाई का टाइम है, ये नहीं देखना कि जिन लोगों ने गोश्त इस्तेमाल किया है या कीमा है या चिकन है तो हमने ये चीज़ डालनी है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़रूरत क्या है, उसको घर में पड़ा हुआ तो गोश्त हमने डाल दिया। आपके पास अवेलेबल हो, डालें, ना हो तो कोई मसला नहीं, कोई शर्त नहीं।
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high